my channel. मैं हूँ अनुप्रिया कपूर and I'm very excited today because we are going to Beer Himachal. It is Kabir's 14th birthday tomorrow and his father Pratham is in town. बहुत impromptu trip है and I'm going to take you along. Kabir's shirt and Kabir is wearing my shirt. So हम बीर पहुंचने वाले हैं and Beer is called the paragliding capital of India. I've been there before. It's a very cute place, very small town जहाँ पे बहुत सारे cute cafes हैं. You can do hiking, trekking apart from paragliding of course, and we would be doing that tomorrow as well. Now to get to Beer from Delhi, you can either take a bus. You have a lot of comfortable Volvos which come here. You can drive down to Beer. It's almost a 12-hour drive, or you can come to Dharamshala जो हमने किया है. We took the flight to Dharamshala and it's about 1.5 hour to maximum 2 hour drive to Beer. And for me, I feel the most comfortable way to get here. वेलकम। कैसी हो? Healthy हो गए, healthy. Double fruit right now. Hi Kanika. भैया कहना हाय। गलत साइड पे जा रहा है। So ये हमारा Airbnb है बीर में. देखते हैं अंदर जाके. This is the blue house. Yeah, this blue house. That's the red one. Nice. It is really cute. Oh, it has a kitchenette also. Yeah, I like it. It's nice. Yeah. You like it? We've been here for how many months, years now? मतलब Kabir? साल हो गया. Did you like the we've been going B&B? I know she's Cute. living it through the lockdown. और ये है सौरभ का घर. It's a lovely house. मैं तो यहाँ पे रुक रही हूँ, मैं B&B में नहीं रुक रही हूँ. So हम बीर पहुँच गए थे करीब 1:30 and we are staying in this very cute Airbnb that you just saw, which is very close to my very close friend Saurabh and Kanika's house. So यहाँ का agenda है basically chill करना and right now we are heading for lunch because we are super hungry. Saurabh! Hello. यार आपका घर बड़ा cute है. है ना? कनिका ready? सब रेडी है खेत में. यहाँ यहाँ तो soft ground है. चिलीज भी हैं. Yeah. Wow. अभी तो सब कुछ वो किया है ना. Everything organic. That's Adrak. Where? That all of that is Adrak. The Airbnb owner, she said, Yeah. if you make Maggie हाँ. and you need some chilies, just put your hand out of the window, you have it. And नींबू. This is कीनू क्या? Quinoa. मुझे कुछ नहीं दिख रहा. Sun fucked. So much sun. Look at your gulu face. You look at your golu golu face. मेरा तो है ही. हम लोग कहाँ जा रहे हैं लंच पे? हम लोग भूमि कैफे. एंड कभी कल पैराग्लाइडिंग. कैन यू सी सो मेनी पैराग्लाइडर्स? आज काम है थोड़ा ना. ये काम है। So we've come to Bhumi Cafe. It's a very popular cafe in Beer. मैं last time जब आई थी we couldn't eat here, so I'm quite excited to check it out.
Bengal safari has a zoo. Yeah, यहाँ पे lighting भी मस्त है. Actually, it's built a beautiful monastery right next to you. So then, Dr. Kabir was saying, meditation. So this is an initiative by my friend Jacqueline called Millennial Letters. You can actually send postcards and it gets collected everywhere and gets delivered to your friends. I'll put it together. With chicken. No, it's tofu. So we're done with the lunch. It was a very hearty lunch. We ordered pasta and sandwich and rice bowl. But सबसे अच्छा इसमें था the veg thali and would definitely say in case you come to Bhumi Cafe, have the veg thali. अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफी के लिए Silver Lining Cafe. I said, how was your Hindi class? So it's a very good new subject for him, right? So he had this. He said we colored during the Hindi class. So what did you color? Butterfly. So what did you learn? T for butterfly. Nice. What chocolate is supposed to be hard? Yes, but I underestimated hotness. Is it good? Yeah. So Saurabh was asking you, do you understand marketing better after doing so many videos? तो मैंने डिसाइड कर लिया है आज की रात हम सब मिलकर अपने पंख खोलेंगे. हमें कई बार लोगों ने बोला है कि तुमसे नहीं हो पाएगा. इट्स अ वेरी बैड आइडिया यार. डोंट इवन ट्राई दिस. आज तक किसी ने किया ही नहीं है, तुम कैसे करोगे? क्लोज योर आईज. ट्राई और अपने पंख खोलो मेरे पंछी की तरह. खोलो. आज तक एक रिसर्च पढ़ी है मैंने कि कभी भी पंख खोलने से कोई मरा नहीं है. थोड़ा गिरने दे. क्या साथ में थोड़ा चढ़ने दे. Once more, everybody together. थोड़ा गिरने दे. थोड़ा चढ़ने दे. और स्वाद को और ये हम आ गए हैं पर्वता पे. We are here to bring in Kabir's birthday. कबीर बेटा 15 साल के होने वाले हैं. 14 साल. 14 साल के होने वाले हैं. आज उन्होंने एप्पल साइडर पकड़ी है. अगले बर्थडे पे छोड़ेंगे नहीं. So we've come to this very cute property called Parvata, and it's a beautiful boutique property, very cozy rooms, and look at how lovely it is. And we are here to bring in Kabir's birthday. हम लोग सब जाके सो गए यार. सुबह थक गए थे. सबने नैप मारा. गंगा. Burfi. Oi, Burfi. Oi, Burfi. Kabir, how do you like this? It's great. Very different than usual birthday. You can't come here. Why? You can't come here. Why not? No. We've done a lot of barbecue parties, if you remember, bro. बीच में. Lockdown, we were all together. कहाँ पे था cook-off? Just the wrist. Just the wrist, yeah. Yeah, no, the other side. Yeah. This side, like this, yeah. 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 Yes.
बेटे के बर्थडे पार्टी में सब एंजॉय कर रहे हैं एक्सेप्ट माय बेटा। से हमने पॉन्ड से लव भी है, कुछ भी है, फ्लो ये रोमांस भी है, सभी जानवर की गैंग में जुमान की है, रूट्स तेरे भाई की है, रैपर मेरे फैन भी है, किक गेम लाइक कौन की है, सुनता मुझे स्टॉर्म की है, कौन इधर सिर्फ तेरे बाप है, गली वाला पूरा सीन किया हमारे इस बात है। हाँ क्यों ना हम हर बात को दिल पे ले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कबीर, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर से केक खाएंगे। अब केक हमें दे दो, अब केक हमें दे दो, अब केक हमें दे दो। सतरंगी है रे बजरंगी हो, तेरी यारी मनमाना इस बारी, सारी तेरी फिक्रे तेरे आगे आगे हारी। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं एंड वी जस्ट वोक अप। सो कल कबीर की बर्थडे पार्टी वॉज क्वाइट अमेजिंग बट वी रैप्ड अप वेरी लेट. But in case you come to Beer, definitely do visit Parvata, or if you want to plan a party there, definitely do so. I am with Saurav and Kanika. मैं कल रात को यहीं पे रुकी थी. BNB बहुत पास ही हमारा, इनफैक्ट यहाँ से दिखता है. That blue house is the BNB where Kabir and Pratham stayed. और उसकी छत पे हमारा एक फ्रेंड भी सो रहा है इस वक्त. तो कैसा लग रहा है आपको बीर में? बहुत बढ़िया. ठंड है लेकिन मज़े भी बहुत है. क्यों आ रहे हैं मजे भाई जी? बिकॉज कबीर बहुत खुश है. भाई जी कबीर तो खुश है, आप क्यों खुश हो? क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद शहर से निकली हूँ, 3 महीने बाद. अनुप्रिया, अगर जिंदगी एक मौका दे तो क्या मांगोगी जिंदगी से? क्या मांगूंगी? या कि मेरे को बस रात को अच्छी नींद आया करे, बाकी सब सॉर्ट हो जाता है. क्या बोल दिया आपने. मेरा उस पे एक फलसफा है. हाँ. फोन से नाता तोड़ोगे तो नींद से नाता जोड़ोगे. सब कुछ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वी कैन, बिकॉज दिस फोन हैज 256 जीबी डेटा. 512 या 256? ये 256. तो अब 1 टेराबाइट का फोन क्यों नहीं लेती? नेक्स्ट ईयर आईफोन 14 लोगी. पर नेक्स्ट ईयर आपको पता है आईफोन 15 आ रहा है. दे हैव डिसाइडेड नॉट टू डू 14. हाँ, उनके ज्योतिषी ने मना किया टिम कुक के. सो अभी दिन के 12:30 बज गए. हमने सुबह से कुछ नहीं खाया. लाइक आई टोल्ड यू, वी वोक अप वेरी लेट एंड नाउ वी आर हेडेड फॉर लंच और ब्रंच और व्हाटएवर यू कैन कॉल इट. हम यहाँ पिंडी किचन में लंच करने आए हैं. ये छत पे नाइस. ओ कितने सारे पैराग्लाइडर्स हैं. अनीश, तुमने कर ली पैराग्लाइडिंग? हाँ जी. कब? सपने में. Both the gravies look exactly the same. थोड़ा सा उधर हो जाओ. So he's going to go for paragliding now. He's going to just get his jacket so that he's warm. How are you feeling? Excited? How was it? Good fun, good fun. Kabir? Did you really enjoy or did you enjoy it? I'm not sure. There's a car behind you. How was it? Great. Great. I feel alive because I hurt my knee. How? I did. I'll show you. It's all recorded. Huh? It's all documented. It's really dumb. And Kabir, you? It was great. Did you feel scared when you were like leaving? Before We have started captured his leaving. reaction. You'll get to see. And did you do any stunts, you guys? Yes. Yeah. Both? Spin. Oh We wow. did You also spins. did? Yeah. Oh wow. How was that? Scary? And you're cold. Chalo, let's get you a hot chocolate. So Kabir, let's go for hot chocolate at June 16th. Yeah, I mixed it. What? Why did this bend? What just happened? What? What just happened? It just went like the whole thing. I thought you dropped it or something. I was freezing.
मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारा लास्ट डे है हमारी छोटी सी ट्रिप का, बेसिकली डे 3 एंड हम लोग कल रात को आई थिंक आफ्टरवर्ड्स प्रतिम एंड कबीर डिड पैराग्लाइडिंग. वी जस्ट केम बैक 8 and were just resting and did nothing, absolutely nothing at all. Slept early. And today we are thinking of going to this village called Andretta. I've heard a lot about it. I've seen some pictures as well. It sounds very, very beautiful and quaint. But pehle to breakfast. Hi Kabir. Good morning. Good morning. Do it, okay? Yeah, you can do the rest. If you want to keep a cloth down, you can. That gives it a nice support. Means sort of in a cup, more than half water and little bit of milk. Okay? So we divide the water like that. So put one. You want to switch on the stove? So are we using the chai masala or actual adrak? We'll use actual things. So we've come to this property called Mirage. It's in Andretta village. We're here for lunch. We've heard very good things about this property, even though we are not staying here. So if I knew about this property sooner, I would have, probably stayed here for the night. Hearing very, very good things about this. So at least lunch तो यहीं पे होगा. कितना cute है. Hi. Oh, एक और है. Oh. I'm trying to vlog this time. This property is so pretty. You can just jog. This is the dining hall. Hi. This is the kitchen. Yeah, this is crazy. This is how you should be in life. So अभी हम लोग आए हैं पॉटरी सीखने. हम बनाएंगे मटके जो कि होंगे सबसे हट के. So हम लोग को बहुत भूख लग गई थी on the way from Andretta to beach. So we just stopped at this place called Khati Dari. Apparently the food here is very nice. चाय पियेंगे? हाँ जी चाय पियेंगे. कभी तुम? क्या खाओगे? Nothing. Soup is really nice here. Hello. Really nice soup. Really nice soup and amrolo. तो चाय आ गई है. You're missing the important thing here. Chai is really nice. हाँ? Nice. Oh, You want to try the soup? That's. So You it's try off. the soup? नहीं. I'll have try. How does it feel like when the trip is coming to an end? Bad. Back to school life? Yeah. Pratham, you? Yeah, I'm looking forward to Goa. Ba-da-ba-ba.